Hello, welcome to my channel Study Law. Today I will discuss with you Section 8 of the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Section 8 comes under Chapter 2, that is, Unfair Means and Offences. The heading of Section 8 is Offences in respect of service providers and other persons. First, we will cover definition of person associated with a service provider which is given under clause 1 under subsection 1 of section 2. As per this, person associated with a service provider means a person who performs services for or on behalf of such service provider irrespective of whether such person is an employee or an agent or a subsidiary of such service provider as the case may be. पर्सन एसोसिएटेड विद अ सर्विस प्रोवाइडर का मतलब है कोई भी ऐसा पर्सन जो सर्विस प्रोवाइडर के लिए या उसकी तरफ से फॉर और ऑन बिहाफ ऑफ सर्विसेज परफॉर्म करता है। इस डेफिनेशन में सिर्फ एम्प्लॉय ही इंक्लूड नहीं होता, इसमें एज द केस में भी एजेंट, सब्सिडरी या कोई अदर पर्सन भी इंक्लूड हो सकता है, provided such person is performing services for or on behalf of the service provider. The definition is broad in nature and does not restrict the expression person associated with a service provider only to persons having a direct employer employee relationship. Therefore, the nature of relationship is not necessarily determinative. Rather, the relevant consideration is whether the person is performing services for or on behalf of the service provider. Direct employment is not a prerequisite for a person to fall within this definition. Even an agent or subsidiary may come within its ambit if it is acting for or on behalf of the service provider. Now, we will start the section 8. Subsection 1. Any person, including the person associated with a service provider, shall be deemed to have committed an offense if he, individually or in collusion with any other person or group of persons or institutions, assists any person or group of persons or institutions in any manner unauthorizedly in the conduct of public examination. कोई भी पर्सन इंक्लूडिंग अ पर्सन एसोसिएटेड विद द सर्विस प्रोवाइडर अगर पब्लिक एग्जामिनेशन के कंडक्ट में किसी पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्संस या इंस्टीट्यूशन को अनऑथोराइज्ड मैनर में किसी भी तरह की असिस्टेंस प्रोवाइड करता है तो वो ऑफेंस का डीम्ड गिल्टी माना जा सकता है। ये असिस्टेंस पर्सन इंडिविजुअली भी दे सकता है या कल्यूजन में किसी अदर पर्सन, ग्रुप या इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर भी कर सकता है। The provision has a wide scope because it uses the expression any person and covers assistance provided in any manner. Therefore, liability is not confined only to the principal persons actually conducting the examination. A person may also attract liability if he facilitates, aids, or assists an unauthorized act connected with the conduct of a public examination. Further, the expression individually or in collusion makes it clear that the offense may arise either from the person's independent conduct or from his concerted action with another person, group, or institution. The use of the word deemed is also significant. It indicates that once the statutory conditions are satisfied, the law treats a person as having committed the offense, even though his role may be in the nature of assistance or facilitation rather than being the primary act itself. Subsection 2. Service provider or any person associated with it shall be deemed to have committed an offense if he fails to report incidents of any unfair means or commission of any offense. सर्विस प्रोवाइडर या उससे एसोसिएटेड कोई पर्सन अगर पब्लिक एग्जामिनेशन के कंटेक्स्ट में अनफेयर मीन्स या किसी ऑफेंस के कमीशन के बारे में जानता है तो उस
इंसिडेंट को रिपोर्ट करना उसकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है। अगर ऐसा पर्सन रिक्वायर्ड इंसिडेंट को रिपोर्ट नहीं करता तो प्रोविजन के अकॉर्डिंग उसको भी ऑफेंस कमिट करने वाला माना जा सकता है। This provision imposes a positive statutory obligation as well as duty to report upon the service provider and persons associated with it. Therefore, liability may arise not only from actively participating in or committing an offense, but also from a failure to discharge the statutory duty of reporting an incident of unfair means or commission of an offense where the ingredients of the provision are satisfied. The expression shall be deemed to have committed an offense is significant because the law creates a statutory deeming fiction, that is, failure to report in the circumstances contemplated by the provision is treated by law as an offense. Subsection 3, where an offense committed by a service provider is prima facie established during an investigation to have been committed with the consent or connivance of any director, manager, secretary, or other officer of such service provider, such person shall also be liable to be proceeded against, provided that nothing contained in this subsection shall render any such person liable to any punishment under the Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge and that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence. अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्राइमा फेसाई ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि सर्विस प्रोवाइडर द्वारा कमिटेड ऑफेंस किसी का डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अदर ऑफिसर की कंसेंट या कॉन्वेंस से हुआ था, तो उस ऑफिसर को भी ऑफेंस के लिए प्रोसीडेड अगेंस्ट किया जा सकता है। यानी सिर्फ ये कहना सफिशिएंट नहीं है कि ऑफेंस कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर ने किया था। अगर इन्वेस्टिगेशन से प्राइमा फेसाई मटेरियल मिलता है कि किसी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर की कंसेंट, इन्वॉल्वमेंट, नॉलेज या कॉन्निवेंस थी, तो उस ऑफिसर के अगेंस्ट भी लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती हैं। कंसेंट का सिंपल मीनिंग है किसी एक्ट के लिए अप्रूवल देना। कॉन्वेंस का मीनिंग है ऑफेंस की कमीशन को नोइंगली अलाउ, फैसिलिटेट या ओवरलुक करना, especially where the person is aware of what is happening. इसलिए ऑफिसर का फिजिकली ऑफेंस कमिट करना ज़रूरी नहीं है। अगर उसकी कंसेंट और कॉन्वेंस एस्टेब्लिश होती है तो स्टैट्यूटरी लायबिलिटी अट्रैक्ट हो सकती है। प्राइमा फेसाई का मतलब है ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड और एविडेंस, या पहली नज़र में सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल होना। यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि ऑफिसर की गिल्ट फाइनली प्रूव हो गई है। इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर अगर सफिशिएंट मटेरियल से प्राइमा फेसाई इन्वॉल्वमेंट अपीयर होती है तो ऑफिसर के प्रोसीडेड अगेंस्ट किया जा सकता है। फाइनल लाइबिलिटी या पनिशमेंट अल्टीमेटली लॉ के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश होनी होगी। The provision creates a form of statutory as well as vicarious liability for persons occupying positions of responsibility within the service provider, where the offence is prima facie shown to have been committed with their consent or connivance. लेकिन प्रोविजो एक इम्पॉर्टेंट स्टैट्यूटरी डिफेंस प्रोवाइड करता है। अगर कंसर्न्ड डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या ऑफिसर प्रूव करता है कि ऑफेंस उसकी नॉलेज के बिना कमिटेड हुआ था एंड उसने ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए ऑल ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज की थी, तो उस पर्सन को एक्ट के अंडर पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं बनाया जाएगा। यानी ऑफिसर को ये एस्टेब्लिश करना होगा कि उसको ऑफेंस के बारे में नॉलेज नहीं थी और डिस्पाइट दैट he had taken reasonable and appropriate preventive measures within his responsibility to prevent such offense. The proviso provides a statutory escape or defense where the concerned officer establishes both lack of knowledge and due diligence. Therefore, merely being a director, manager, secretary, or officer should not by itself be treated as sufficient to attract punishment. The statutory conditions relating to consent or connivance have to be satisfied, subject to the defense available under the proviso. So,
This is Section 8 of the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. मैं और भी sections की वीडियो बनाता रहूँगा. I hope you like my videos. Please subscribe to my channel. Thank you.